Hello friends, welcome back to the channel. In today's video, we'll be talking about what are accounting principles and what are accounting concepts and what are the various principles that one must know while preparing the accounting statements. So, to know all of them, watch this video till end. So, सबसे पहले हम बात करते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं क्या. So accounting principles are standard language, or you can say a set of rules and guidelines that will be helpful while preparing the accounting statements, and these are basically known as your generally accepted accounting principles. So it can come in as your exam for multiple choice question, that what is the full form of GAAP. So you need to remember it, generally accepted accounting principles. So generally accepted accounting principles are standard language, or you can say a set of rules or guidelines for preparing accounting statements. And ये principles बनाए क्यों गए हैं? Basically जितने भी businesses हैं वो अपने accounting statements को इन rules के according prepare करें, so that अगर कोई भी यूजर इंफॉर्मेशन लेता है अकाउंटिंग स्टेटमेंट से अलग अलग बिजनेसेस के, तो उन सभी यूजर्स को बेनिफिट होगा, बिकॉज सभी जितने भी अकाउंट्स मेंटेन करते हैं बिजनेसेस, सबको ये रूल्स फॉलो करने होते हैं. दे आर बेसिकली नोन एज योर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. तो बेसिकली ये प्रिंसिपल्स आपके एक तो मैनमेड होंगे, फाइन, एंड इन्हीं प्रिंसिपल्स के बेसिस पर जो सभी अपने बैलेंस शीट्स और अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को बनाएंगे वो रिलायबल फॉर्म में बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव मैनर में बनाएंगे, एंड प्रॉपर यूनिफॉर्मिटी विल बी मेंटेन्ड, दैट सभी बिजनेसेस इन रूल्स को फॉलो करते हुए ही अपने अकाउंट्स को मेंटेन करेंगे. फाइन, सो कंपेरेबल इजी हो जाता है, एंड जो आपका डेटा रहता है आपके अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स का वो बेसिकली रिलायबल हो जाता है, because you are following the guidelines and the rules. So according to them, the information which the businesses are revealing in their accounting statements will be much more trustworthy, and everyone is using these concepts, and with the help of these concepts they are preparing the accounting statements, so that the information that has been provided by the various enterprises that are meaningful to वेरियस यूजर्स. तो बेसिकली आपके तीन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं जिन पर हम फोकस करने वाले हैं. फर्स्ट इज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, देन इज कंसिस्टेंसी, देन इज योर एक्रूअल कॉन्सेप्ट. तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपका आता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, और यू कैन से दीज आर योर assumptions that one must keep in mind while preparing your accounting statements. Fine. तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है? That it should be assumed by the business enterprises that they will continue for a longer period of time, or they will exist in the market for a longer period of time. Fine. तो जितनी भी आपकी वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, वो आपकी क्या एज्यूम कर चलेंगे कि उनको लॉन्गर टाइम पीरियड तक के लिए सर्वाइव करना है मार्केट में. Obvious है, if I am setting up a business today, then I will never think of that tomorrow or the day after or after a few days I will shut it down. Nobody thinks that much. Fine. So जब भी books of accounts को maintain करना होता है, so we keep in mind that we will exist in the market for a longer time period. And अगर आपने कभी नोटिस किया हो कि हम बोलते हैं कि शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज होती हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होती हैं, तो ये क्लासिफिकेशन भी तभी पॉसिबल है अगर आप सोचोगे कि आज बिजनेस एस्टैब्लिश करके देन टुमारो और आफ्टर अ वाइल आई नीड टू शट डाउन, देन हाउ कैन यू क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू दैट शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज. सो दिस क्लासिफिकेशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन इफ यू आर assuming that you will be surviving in the market for a longer time period. Next concept we have is consistency concept. So consistency का meaning क्या होता है? Basically whenever you practice something on a regular basis or throughout the year, the same practice if you follow, that is your
consistency. So in terms of accounting, what does it mean as a accounting concept? Consistency is basically that businesses should follow the same practices or the same methods every time, or you can say throughout their business. Whenever they are preparing accounting statements, they need to follow the same practices and the same method. इससे क्या होगा, एक तो आपका उससे इंफॉर्मेशन रिलायबल रहेगा एंड कंपेरेबल भी. हाउ? सपोज for example, in business we have some fixed assets like land, building and so on. So उसके ऊपर हम depreciation charge करते हैं. Fine. So जो depreciation charge करते हैं, we have various methods for that. Like we have straight line method, we have written down value method. So ऐसे methods आपके पास option है, you can choose it from. अगर आप continuously same method लेके चलते हो, आपके लिए भी बेनिफिट होता है एंड यूजर्स, जो वेरियस यूजर्स इंफॉर्मेशन लेते हैं, उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा. कैसे बेनिफिशियल होगा? कि वो कंपेयर कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को कि अगर आपकी लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में आपने डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से लगाया है एंड करंट ईयर में भी आपने स्ट्रेट लाइन से ही लगाया है, देन दैट इंफॉर्मेशन इज कंपेरेबल बिकॉज हम सेम मेथड यूज कर रहे हैं. अगर मैं बात करूं, आप लास्ट ईयर तो फॉलो कर रहे थे स्ट्रेट लाइन मेथड, नेक्स्ट ईयर आप यूज कर रहे हो रिटन डाउन वैल्यू मेथड, देन यूनिफॉर्मिटी इज नॉट मेंटेन्ड. वहां पर आपका जो यूनिफॉर्मिटी है वो मेंटेन्ड नहीं रहेगी. क्यों? बिकॉज मेथड ही अलग है, तो जो आप डेप्रिसिएशन चार्ज करने वाले हो वो डिफरेंट आएगा फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन मेथड एंड फ्रॉम द रिटन डाउन वैल्यू मेथड. तो आपको बुक्स को मेंटेन करते टाइम कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होगी कि जो भी आप प्रैक्टिसेस या मेथड्स अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स बनाते हुए फॉलो अप कर रहे हो, उनको रेगुलरली आप सेम ही रखें और यू कैन से कांस्टेंट ही रखना चाहिए उनको. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वी हैव इज एक्रूअल कॉन्सेप्ट. सो एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? इन दिस कॉन्सेप्ट बेसिकली वी चेक अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज. तो इस कॉन्सेप्ट में हमें कहा गया है कि यू नीड टू record your sales or revenue whenever you have done it, whether you have received the cash or not. Similarly, if we talk about expenses, if you have incurred some expenses to assist your earning, then you need to record it at that particular time or at that particular day itself. चाहे आपने एक्सपेंसेस का पेमेंट किया है या नहीं किया, बट जिस दिन आपने वो एक्सपेंस कर दिया, on that particular day you need to record in your books of accounts. Suppose I'll give you an example for more clarity of the accrual concept. Suppose on 1st September you receive an order. On 1st September you are receiving an order. On 2nd September you are getting half of the payment. Fine. Suppose I am the seller, you are the buyer. You are giving me the order and I have received the order on 1st of September. On 2nd of September, I have received the payment from you, half of the payment. Fine. And then on 5th of September, I am delivering the goods to you. On 5th of September, I am delivering the goods to you. तो अगर मैं आपको 5th को डिलीवर कर रही हूँ, that means what? कि जो मेरे गुड्स की पोजीशन है वो मैंने आपको ट्रांसफर कर दी. फाइन. नेक्स्ट ऑन 10th of September आई एम रिसीविंग दी फुल पेमेंट. नाउ यू विल आस्क, वी हैव सो मेनी डेट्स, तो हमें पता कैसे लगेगा कि कौन से दिन हमें सेल्स रिकॉर्ड करनी है, वेदर टू रिकॉर्ड ऑन 1st, 2nd, 5th और 10th, कैसे पता लगेगा? सो यू नीड टू सी कि जिस दिन आपने अपने गुड्स की पोजीशन ट्रांसफर कर दी कस्टमर को और यू कैन से बायर को, ऑन दैट पर्टिकुलर डे यू विल रिकॉर्ड इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट. सो वी हैव दैट डेट एज 5th September. सो 5th September को आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करोगे दैट यू हैव डन अ सेल ऑफ रुपीज सो एंड सो. सपोज यू हैव डन द सेल ऑफ 1 lakh total, and herein you are receiving half, and on 10th you are receiving the full payment. But you need to check upon on
which date you are transferring the possession of the goods to the customer. Fine. So जिस दिन transfer कर दी हमने goods की possession, on that particular day we will assume that we have done the sale, no matter you have received the cash or not. Because आप देख सकते हो second को अभी तक हमें सिर्फ half payment receive हुई है, fifth को तो obviously अभी तक half ही है, and 10th को हमें full payment receive हो रही है. So the same goes कि आप उसी दिन रिकॉर्ड कर दोगे सेल्स को जिस दिन आपने गुड्स की पोजीशन कस्टमर को ट्रांसफर कर दी. फाइन, नो मैटर यू हैव रिसीव्ड द कैश फ्रॉम द कस्टमर और नॉट. सिमिलरली एक्सपेंसेस के केस में भी कि एक्सपेंसेस जिस दिन आपने इनकर कर दिए ऑन द सेम डेट you will record them in the books of accounts, no matter you have paid the cash or not. Fine. So these were your basically accounting concepts or assumptions that you keep in mind while preparing the accounting statement. And we'll be talking about the different kinds of accounting principles in my next video. So do watch my next video to understand the accounting principles in detail. And if you still have any doubts regarding this topic, you can comment in the comment section. And अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो do like, share and subscribe to my channel. Also, please don't forget to press the bell icon to watch my upcoming videos on time. Thanks for watching my video. Bye bye.